So let's do the unit 4. तो वहां पे मैं देख रहा था, ये जो मेरे वीडियो लेक्चर है ना, वहां पे जो पुराने हैं उसमें तीसरा और चौथा यूनिट ही है खाली। और चूंकि वो मैंने थोड़ा आराम से पढ़ा है, तो अगर तुम्हें कहीं डिफिकल्टी होती हो तो वो लेक्चर्स भी देखा करो। वो ना जिसको सिंपली लिखा है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, नॉट बैच वैच। तो अगर तुम वहां हो तो मतलब मैंने रिकॉर्डिंग दबा दिया, एक मिनट। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो भी देख लेना। वो ज्यादा मैंने आराम से, उस टाइम टाइम था, इस वक्त थोड़ा मैं जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने आराम से पढ़ा है। तो अगर वो भी देख लो, ये भी ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कट किया या कुछ कम किया। लेकिन हाँ, थोड़ा 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 जल्दबाजी है, क्योंकि बोल रहे हैं जल्दी कर सिलेबस, बहुत परेशान। तो एनीवेज, हमारे यूनिट 4 की तरफ। अब यूनिट 4 में क्या है, हम वी वांट टू, जो हमारा फर्स्ट गोल है, वी वांट टू शो दैट जो अपना के है, which was the product of the Gaussian curvature, product of the principal curvatures at a point on a surface. So ये जो k है, which we know is basically t square by h square, or something like ln minus m square divided by eg minus h square। तो ये इसके बराबर है, और हम ये साबित करना चाहेंगे, हम इसका जो हमारा गोल होगा इस पहले हिस्से का, वो ये कि दिस इज इंट्रिंसिक। तो बाय दैट आई मीन that this can be written in terms of uh, first order fundamental magnitudes. अगर मुझे पता भी नहीं है सरफेस क्या है, कैसी है, उसकी इक्वेशन, अगर मुझे पता है E और G और F, यानी पता है, तो उससे मुझे ये मिल जाएगा। उसका मतलब ये हुआ, खैर E G मैंने सबसे कोई डिनोमिनेटर तो फिर मुझे पता चल ही जाएगा, इफ आई नो E F G। तो बेसिकली हमें इसमें गोल ये होगा कि वी कैन राइट ln माइनस m स्क्वायर in terms of EFG and its partial derivatives, so that if I am given EFG without any reference to the coordinate system of the surfaces, कोई मुझे कहे E is a function of U and V, F is a function of U and V, and G is a function of U and V, and they are the first order fundamental magnitudes of some surface जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं कहूँगा that is sufficient information for me to evaluate the Gaussian curvature. So उसी को बोलते हैं theorem egregium of the Gauss। गाउस ने बहुत सारा, कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने बहुत काम किया है मैथमेटिक्स में थ्रू आउट, लेकिन उसको लगता था ये उसका बड़ा थ्योरम है, to show that Gaussian curvature is intrinsic to the surface. So first we just find these Gauss formulae. तो ये शुरुआत में हम ये इवैल्यूएट करेंगे, ये हमारा हिस्सा है उसका, जो मैंने कहा we want to Gauss formulae for a surface R sub u can be written as L times n plus small l times r sub u plus some lambda times r sub v, इसमें मैं भी आऊंगा, r sub uv is equal to m times n plus the small m times r sub u plus, now we can write this as basically plus mu times r sub v, and r sub vv can be written as n times n plus n times r sub u plus mu times r sub u, where L, M, N and lambda, mu are called critical symbols. Actually इनका एक और notation भी है in terms of
उसको एक और एक्सप्रेशन भी है इसको लिखने का, बट वी आर टेकिंग द सिंपलेस्ट वर्जन क्योंकि तुम आराम से इसको कर सको। क्रिस्टोफर सिंबल्स इनको बोलते हैं। एंड आर हम ये दिखाएंगे बेसिकली ये जो ये नंबर्स हैं दे आर suitable functions and they can be written in terms of EMG of E, F, G and their partial derivatives with respect to Q and F. में हम ये दिखाना चाहते हैं we can basically write it in terms of this linear combination where these constants here of element तो पता ही है, element are second order fundamental magnitudes, so that's known. अभी जो unknown numbers है we are saying that they can be written, these numbers can be written in terms of EF and G. Okay, now पहले जरा proof करते हैं हम proof. Now since r sub v comma this unit normal to the surface at any point, they form a basis of r sub because they are linearly independent three vectors. Because though these two do not lie on a line and this is third one is perpendicular to both, so they obviously are linearly independent. Therefore, they form a basis. Three linearly independent vectors inside R3 would form a basis in R3. So that means any vector can be written as a linear combination of these three vectors, right? So that therefore any vector, yeah, कोई भी vector basis है तो मैं any vector लिखूं, and since L, M and N are projections of R sub U, R sub UU and R sub UV, common, and R sub VV respectively along N unit normal vector, we can write जो मैंने पहले लिखा R sub UU is equal to L times N plus what was that, small l times RU plus lambda times R sub V. R sub UV is equal to M times N plus small m times R sub U plus mu times R sub V, and RVV is equal to N times N plus ln times RU plus mu times R sub V. Where of course यहाँ पर मैं लिखूंगा lmn and lambda mu are scalars to be determined. पहले तो ये कि बेसिस में हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, लेकिन हम पहले से ये कह रहे हैं ये जो यहाँ पे स्केलर होगा वो एल ही होगा, यहाँ पे जो मतलब ये तो अननोन है ये 6, लेकिन ये 3 नोन है. व्हाई? क्योंकि सपोज आई हैड रिटन आर यू यू, राइट, एज सम अल्फा टाइम्स एन प्लस एल टाइम्स आर यू, मान लो तीनों के तीनों अननोन थे. What I do, I take the dot product of both sides with n. So you will get RUU dot n is equal to, देखो n is perpendicular to both RU and RV, so it would be 0. So it would be alpha into n dot n, which would be just alpha, यानी alpha बराबर होगा RUU dot n, that is nothing but L. It is the projection of the vector R sub UU along the unit vector.
सो इसी तरह से m के लिए भी ट्रू है, इसी तरह से n के लिए भी ट्रू है. So therefore these are true, but the question is of these Christopher symbols which we want to show that they can be written in terms of E, F and G. Basically मुश्किल तो नहीं है वो दिखाना. The only thing is you have to do a lot of calculation. So let's see, मैंने यहीं पे रखा. हमें बहुत सारी इक्वेशंस बनानी होंगी. सबसे पहले E sub u. अगर मैं E को partially differentiate करूँ with respect to u, so that would be del by del u of E, which is the same thing as del by del u of ru dot ru, and when you differentiate it, so that would be r sub uv dot r sub uu dot ru plus r sub u dot r sub uu. Dot product is commutative, so it would be basically twice r sub u dot ru. तो मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है. तो इसी तरह से f sub u होगा del by del u of f, वो होगा बेसिकली पार्शियली डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू आर यू डॉट आर बी. और अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो वो होगा आर सब यू यू डॉट आर वी प्लस आर सब यू dot r sub uv. I have to remember that mixed partial derivatives are equal because we are assuming that r is smooth. Similarly, gu होगा twice r sub u. क्या होगा, ये तो vv है, so it would be v dot r sub uv. Yes, या vu बात एक ही है. Okay, so similarly f sub v, मैं अब इसको evaluate नहीं, e sub v होगा twice ru dot ruv, right, and f sub v होगा इसी तरह से ruv dot rv, तो it is f is ru dot rv, तो ठीक है, प्लस ru dot ruv, एंड g sub v होगा twice rv dot rvv. सो ये थोड़ा लंबा चौड़ा था, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स. अब जो ये इतने इक्वेशंस को हम नाम नहीं दे सकते, तो इसलिए हम इस पूरे सिस्टम को नाम देते हैं 4. ये जो 6 इक्वेशंस. नाउ फ्रॉम 4 मुझे मिलेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, तो वी विल गेट आर यू डॉट आर यू यू, प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू 1/2 ई सब यू, मतलब इस वाली इक्वेशन में से. सो 6 और इक्वेशंस मैं लूंगा. इसी तरह से आर यू डॉट आर सब यू यू वुड बी इक्वल टू एफ सब यू माइनस आर सब यू डॉट आर सब यू वी, विच इज इक्वल टू एफ सब यू माइनस 1/2 ई सब यू. मतलब ई सब वी को मैंने यूज किया एफ सब यू में, तो मुझे ये दूसरी इक्वेशन मिली. इसी तरह से आर सब यू डॉट आर सब यू वी बराबर होगा 1/2 ई सब वी. आर सब वी डॉट आर सब यू वी बराबर होगा 1/2 जी सब यू, यहां से इस इक्वेशन से. और फोर्स 4 हो गई, मुझे 2 और चाहिए. दैट इज आर सब यू डॉट आर सब वी वी बराबर होगा एफ वी माइनस 1/2 जी सब यू. ये जो सभी डॉट प्रोडक्ट्स है पॉसिबल, जो यहाँ पे है 6 डॉट प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, u का uu के साथ, u का uv के साथ, है ना. इसी तरह से u का uv के साथ, v का uv के साथ, इसी तरह से u का vv के साथ और v का vv के साथ. तो
यानी लास्ट बट नॉट लीस्ट होगा ये is equal to 1/2 G सभी 6 इक्वेशंस 6 पॉसिबल डॉट प्रोडक्ट्स की 6 इक्वेशंस को नाम मैंने दिया सिस्टम 5। ठीक है, अब हम लेंगे इक्वेशन 1 जो हमने यहां ली थी ना 1 2 3। तो पहली इक्वेशन को हम, जो पहली वाली इक्वेशन है, पहले हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आर यू के साथ, फिर लेंगे आर वी के साथ। सो मल्टीप्लाइंग स्केलरली means dot product हम लेंगे each side of equation 1 by with r sub u and r sub b successively। हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, that is r sub u dot r sub uu is equal to l sub r u dot ru plus lambda times r sub uv, राइट, दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि n के साथ आर यू का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो पहला कंपोनेंट खत्म। इसी तरह से आर वी डॉट आर सब यू यू बराबर होगा l टाइम्स आर यू डॉट आर वी, देन आई हैव lambda टाइम्स आर वी डॉट आर। यूजिंग इक्वेशंस 5 था इसका नाम। ये जो सिस्टम ऑफ 5 है, क्योंकि मुझे ये सारे डॉट प्रोडक्ट सामने हैं, आई कैन राइट देम इन टर्म्स ऑफ EFG। तो I will get 1/2 EU is equal to L times E, ये तो E है अपना, और प्लस lambda times F। और इसी तरह से ये जो है RV डॉट RU, ये मैंने निकाला था, मैं सीधे लिखूंगा FU minus 1/2 EV is equal to L times, of course this is F ही है ना, और प्लस lambda times this is G। तो उससे मैं दो इक्वेशंस मिलेंगी, ट्वाइस, मैं लिखता हूँ इसको यहाँ लेके, ट्वाइस EL, and remember I'm looking for L, M and ये जो क्या बोलते हैं क्रिस्टोफर सिंबल्स है, LM and lambda mu nu, इनको मैं निकालना चाहता हूँ in terms of EFG and their partial derivatives। तो प्लस ट्वाइस F lambda माइनस E सब U is equal to 0, और दूसरी इक्वेशन रहेगी ट्वाइस FL plus twice G lambda minus twice F sub U minus E sub V is equal to 0। तो ये हमारी इक्वेशन है। Now we solve for L and lambda by cross multiplication। Solving for L and lambda, मेरे पास ज्यादा नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा, तो I will get L divided by this into this minus this into this, जो ना यहाँ coefficients। So it would be basically थोड़ा सा लंबा चौड़ा, it will be minus twice F into twice F sub U minus EV, थोड़ा सा complicated सा, plus twice G E sub U is equal to lambda divided by, so lambda this into this into this minus this into this, you know, cross multiplication से तो करते हैं। So it will be twice E sub U F plus twice E into twice F sub U minus EV over the word is equal to 1 divided by 4 times EG minus F square। So ये basically है 4 times EG minus F square। Okay, so that gives, इसको अगर हम simplify करें तो so that gives me L and lambda, so which implies that L is equal to, इसको after simplification 1 by twice H square, क्योंकि 2 throughout यहाँ कॉमन था, 2 throughout कॉमन है, यहाँ 4 है, तो इसको मैं यहाँ ले जाऊंगा by cross multiplication। So I would get L is equal to twice H square, 1 by twice H square
into G into E sub U minus twice F sub U plus F into E sub V, और मेरा lambda जो बराबर होगा वो होगा 1 by twice H square into twice E F sub U minus E sub V plus minus F into E sub U. So this gives us the values of L and lambda. Let's call this equation 6. Similarly, M और mu हमें मिलेंगे अगर मैं equation 2 पकड़ूं. Now similarly, on multiplying scalarly, each side of equation second by R sub U and R sub V successively, and using the system of equations 5, we get 1 by 2 E sub V is equal to M times E plus mu times F, and 1 by 2 G sub U is equal to M times F plus mu times G. तो वो सिंपली है वो डॉट रख लेने के बाद, एंड सॉल्विंग फॉर, जैसे कि हमने ऊपर किया, m and mu, we get, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, m is equal to 1 by twice h square into g e sub v minus f into g sub u, and mu हमें मिलेगा 1 by twice h square into e g sub u minus f e sub u. So let's call this pair of equations 7. तो हमें 4 मिल गए, lambda, L mu, mu and m, और बचा n and nu, तो वो थर्ड इक्वेशन से मिलेंगे. So अब वो करेंगे नहीं, वो डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि it's cumbersome. Similarly, on multiplying equation third scalarly by R sub u and R sub v successively, we get, and using 5, we get f sub v minus 1 by 2 g sub u is equal to n times e plus nu times f, and 1 by 2 g sub v is equal to n times f plus nu times g. And therefore, and solving for n and nu, जैसा कि हमने पहले केस में किया था, we get n is equal to 1 by twice h square twice g f sub v minus g sub u minus f g sub v, and nu is equal to 1 by twice h square into e into g sub v minus twice f sub v plus f into g sub v. So we can write these Christoffel symbols as of course this element nu जिस तरह से ये है, लेकिन of course ये काफी complicated formulas हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हम सिस्टम को reparameterize कर सकते हैं. Let's call this equation 9, this equation 10. So I have got equation, I think पहले मैं लिखता हूँ, equations 8, 9 and 10 give us the Christoffel symbols in terms of E, F, G and
their partial derivatives with respect to u and तो इसकी कॉरलरी है बड़ी सिंपल सी, यानी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर मैं मान लूं मेरी जो पैरामीट्रिक कर्व्स है वो ऑर्थोगोनल है, और वो हम कर सकते हैं बाय चूजिंग reparameterizing. Now if the parametric curves are orthogonal, हम इसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो क्या, we can have L is equal to, क्योंकि then F is equal to 0, तो F को 0 पुट करो, उसका मतलब h स्क्वायर भी सिंप्लीफाई होगा, वो होगा EG। तो hence L मुझे मिलेगा in a much simplified form EU by E 1 by 2, M होगा EV divided by twice E, और N होगा minus G sub U divided by twice E। इसी तरह से lambda होगा minus E sub V divided by twice G, mu होगा G sub U divided by twice G, and mu होगा course इसके बराबर होगा GV divided by twice G. So it makes it simpler. Hence the Gauss's formula can be written properly. वरना हम इनको वापस अगर वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे जो Gauss's formula है, तो इमेजिन वो कितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे। मतलब इनमें अगर हम इनको सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो they will become very complicated. लेकिन अगर ये orthogonal है then there is this possibility we can write it like this. तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि आगे भी हमें इसी तरह की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस मिलेंगी जिनको हम इस तरह से डायरेक्टली नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम ऑर्थोगोनल ले, या लिखता हूं मैं, hence Gauss's formula reduced to what, R sub u is equal to ln plus 1 by 2 E sub u by R sub u minus E sub v, यानी ये lambda, okay, divided by twice G into R sub v। तो इसी तरह से R sub uv is equal to mn plus 1 by 2 E sub v divided by 2e with plus yes, plus G sub u by twice G R sub v, and R sub vv is n times n minus G sub v divided by twice e, और यहाँ पे भूल गया, यहाँ क्यों है, then plus G sub v divided by twice G R। So simpler form में ला सकते हैं if we assume that the curves are orthogonal. तो similarly for a Monge surface, तो ये एक एक्सरसाइज में तुमको छोड़ता हूँ, इसमें कुछ नहीं सब्स्टिट्यूशन करना है। Show that for a surface z is equal to f of x y, L is equal to, ये तुम्हारा होम असाइनमेंट होगा, p r divided by h square, m is equal to ps by h square, n is equal to pt by h square, lambda is equal to qr by h square, mu is equal to qs by h square, and of course बचा क्या, mu is equal to qt by h square. So this is a nice formulation, और तुम्हें वैसे पता ही है what is p. p is del z by lx, q is of course del z by del y, इसी तरह से r है del square p q r st, I think this is this thing, and so on and so, वो तुम्हें पता ही है, तो you just have to do this. Next is Gauss characteristic equation. So
देखो इसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इसको किसी ने आज तक ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाया, बहुतों ने की है क्योंकि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ये ग्रास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम दिखाएंगे, we will show that t square can be written as 1 by 2 f uv minus e vv minus g uu plus m square into e plus twice mu f plus mu square g minus ln small ln e plus l nu plus lambda n times f plus lambda nu g। देखो अगर मैंने ये प्रूव कर लिया, of course where e f g are first order fundamental magnitudes, ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं, पहले तो ये गाउस फॉर्मूली और गाउस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये मिला के बनाता है गाउस थ्योरम एग्रीगियम। एंड लैम्डा क्या है, एल एम एन एंड लैम्डा म्यू न्यू आर क्रिस्टल सिंबल्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर ये ट्रू है तो बेसिकली आई हैव रिटन दिस टी स्क्वायर व्हिच इज माय ln minus m square in terms of partial derivatives of EFG and the Christoffel symbols. But Christoffel symbols can themselves be written in terms of EFG and partial derivatives of their partial derivatives. Therefore, in reality, I have written t square, which is ln minus m square in terms of EFG and their partial derivatives. Therefore, k, which is basically ln minus m square, या t square by eg minus f square. तो अगर मैं t square को लिखा हूँ indirectly in terms of EFG and their partial derivatives, then of course I can write K as um, in terms of EFG and their partial derivatives with respect to U and V. So basically, so that finishes our theorem egregium if we prove this, that this can be written in like this. और ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा हमें गाउसेस फॉर्मूले को यूज करना होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद क्रिस्टोफल सिंबल्स। ओके, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देखूं। यार इसको हटाते हैं, ये हमारे पास 5 मिनट है, यानी हम कुछ कर सकते हैं, वरना मैं कट कर देता। ओके, प्रूफ। सो फ्रॉम गाउसेस फॉर्मूले, एक्चुअली वहां पर हमने ये किया था, यू रिमेंबर दिस, आर सब यू यू इज इक्वल टू एल एन प्लस लेमडा, नहीं क्या था गाउसेस फॉर्मूले जो हमने इवैल्यूएट किया, वो क्या थे, ln plus l times r sub u plus lambda times r sub b। इसी तरह से r u v would be m times n plus small m times r u plus mu times r sub v। इसी तरह से r sub v v होगा n times n plus small n times r sub u plus mu times r sub v। ये मेरे पास गाउसेस फॉर्मूले है। From Gauss's formulae, I can just take their dot products. अगर मैं लूँ ये आर यू यू डॉट आर यू वी, तो वो बराबर होगा इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ। यानी खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब सोचो तुम, एन का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली 1 होगा, और आर यू और आर वी के साथ 0 होगा। यानी हमें सिंपली बचेगा एल का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा, नहीं नहीं, पहले मैं लेता हूँ, खुद के साथ नहीं ले गया, मैंने तो गलत लिखा। ओके, आई टेक आर यू डॉट आर वी वी, बेटर स्टिल, ठीक है, यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट मैं लेता हूँ,
खुद के साथ प्रोडक्ट। अब उसका भी यही हिसाब किताब है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो बचेगा ln, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, बेसिकली मुझे मिलेगी एक टर्म ln, राइट। फिर देखना है आर यू का एन के साथ तो 0 होगा, आर यू का आर के साथ होगा ई, सो आई शुड हैव एल एन ई एक नंबर। और फिर ओके, एल एन का आर वी के साथ तो ये होगा जी, सो एक नंबर और मिलना मुझे चाहिए एल न्यू जी। ओके, और देन फिर मैं अगर तीसरे वाले का लूं, आर वी का एन के साथ 0, आर वी का शुड बी एन, क्योंकि आर वी का यू के साथ आएगा एफ, so it should be L lambda n times f, and of course RV dot RV is G, so it should be lambda nu G। lambda nu G 2 बार आएगा नहीं, lambda RV का RV के साथ तो G होगा, तो पहले कैसे आया था मेरा G, ये G तो यहाँ नहीं होना चाहिए, L, मैंने कुछ गलत किया, L न्यू टाइम्स F होना चाहिए, बिकॉज L, क्योंकि RU dot RV is F, ठीक है, तो यहाँ F होना चाहिए, और देन आई शुड हैव lambda, और यहाँ n होना चाहिए क्योंकि ये मैंने कुछ गलत लिखा, म्यू म्यू एन एम एन लैम्डा एम, तो ठीक है, तो मैं इसका इसके साथ ले रहा हूँ, तो एल एन का तो खैर हो गया सेटल, एल एन ही आएगा, फिर इसका इसके साथ 0, आर यू डॉट आर यू ई एल एन, फिर इसका एल न्यू एफ, तो ठीक है, फिर आएगा लेमडा एन एफ, फिर आएगा लेमडा न्यू जी, मुझे तो ये सही लग रहा है, so that can be written as ln plus ln e plus l new plus lambda n, ठीक है, times f plus lambda new g। सिमिलरली अगर मैं लेता आर यू बी डॉट का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ इसका लेना था, सो ऑब्वियसली पहले तो मुझे मिलेगा एम स्क्वायर, फिर मिलेगा एम स्क्वायर ई ट्वाइस एम न्यू, ये तुम खुद करोगे, एफ प्लस न्यू स्क्वायर जी भी मिलेगा खुद के साथ, डॉट प्रोडक्ट जब आएगा तो जी। Let's call this equation 1 and 2, so that is ru u dot r v इसके बराबर है। ओके, ये खत्म होने वाला है, सो लेट मी इसको मैं स्टॉप करता हूँ, तुम फिर से ज्वाइन करो, आर यू